morning, day 21, last day of Glacier. এক হাঁটু বরফ, ওইদিকে সব অ্যাডভান্সদের টেন্ট ঢেকে গেছে বরফে, এতটা স্নো। ওটে এত স্নোর মধ্যে আজকে ভালো নিয়ে যাবে না, তাও নিয়ে যাচ্ছে আজকে। তো সব ঢেকে গেছে, এদিকে ফলিন, এই অবস্থা। কুকুরগুলো বেশ মজাই আছে, ঘুরছে ফিরছে। টেন্টগুলো সব ঢেকে গেছে বরফে। Let's come right now. Hard trekking. Which are like it's like for 45 people. Passing that glacier is more than enough. Right? Yes. Now today is the last day on the glacier, so whatever doubts you have, so we'll be like doing all the activities. हम सारा खोल के रखेंगे आज, like gymnastics will be there, big stop will be there, rock climbing will be there, all the activities, anchor dress will be there. So today, after right? Because as I told you before, they are ready. We'll see 28 days performance, full 28 days performance. So carrying part was last day. This is the condition of today. We are sinking in the snow. Hannah, buddy? Look at the sight. Fast resting point. ये बंदा, दो बंदा. What a condition, bad condition. But they are pushing me to go. Let's try. Today's condition very bad. Oh. I'm exhausted right now. First party at the middle. Come. This is the last day of Glacier. Don't know it's the last day or not. It's very tiresome, hectic. चलते जाओ, मरना है तो मरने जाओ. This is the rule here. Very tired, exhausted. What's going on? We are superhumans. পৌঁছে গেছি। আজকে সব থেকে বেশি কষ্ট হলো আসতে, বাকি মেয়ে চড়া তো কষ্ট হয়নি। হার্নেস করতে হবে এইটার। ক্লাইম্বিং এক্সামিনেশন, জুমারিং and front point বলছি, পিক অ্যান্ড টো examination is going on. My rope instructor Kunga sir is making ready to rappelling. Hi. And our exam is going on. Nama. One rappelling down, one zooming up.
Okay, Bobby, come on. बोलते ना यार पर आ गया कोई होता ना लाइक वो आगे नहीं जाऊँ ये नहीं करना किसी ने कहा इट्स अप टू यू हैव टू ग्रैब द टेक्निक वी कैन मेक यू लाइक अभी कर रहा हूँ ये मारो ये कर रहे हो आप ग्रैब नहीं कर रहे हो उसमें हमारा कुछ नहीं सो आपको भी एक एफर्ट होना चाहिए वंस यू गिव द एफर्ट आपको भी वो एफर्ट देके ही वो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा हम आपको देखते ना हाँ ये करो वो करो ये आपको दिमाग रखना है हाँ मेरे ये कल कर रहा हूँ उसको इम्प्रूव करना है टर्न बाई टर्न जितना फर्स्ट करोगे उतना आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा ठीक है एक और मत करो यार इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ मैं सेलिब्रिटी बन जाओगे सर सेलिब्रिटी है सर भाई और क्या चाहिए देखो अभी क्वालिफिकेशन के लिए सीधा आप मैनेज करो ना आप कैसे कर रहे हो आपको कितना डांट खा रहे हो कितना गलती कर रहे हो कितना इम्प्रूव कर रहे हो कितना लाइक मिल रहा है आपको ग्रेडिंग सी हमारा क्या काम देखना है ग्रेडिंग कैन ग्रेड बाय योरसेल्फ आल्सो नो दैट हम लोग आपको गुस्सा आपको बिगाड़ना है वो नहीं करते हम लोग ना अब हमको मारो ऐसे से मारो फिर भी गुस्सा नहीं होंगे हम जो आपने किया वो उसी अनुसार यूज उनको अच्छा तो यार Make test. Playing, zooming. ट्रैवलिंग हो रहा है अभी आज का आखिरी दिन है राथोंग ग्लेशियर में हमारा দারুণ বরফের ভ্যালি কষ্ট হচ্ছে আর দারুণ थोड़ा दे थैंक यू बिस्किट ना ग्लेशियर में हाँ लास्ट डे ग्लेशियर Rathong Glacier. Last day. Today is our last day at Rathong Glacier. We have completed our glacier training here, and this is the 5th day of Rathong Glacier, and everybody is busy. Everybody is distributing the settle equipment, and this is Rathong Glacier. We the opposite side, the left side of the Rathong Glacier, and everybody is very quite happy. Morning weather was too bad. Yes, now everyone is happy. Oh, Rathong Glacier. I've successfully been completed my Rathong Glacier training, and here is the view of 360 Rathong Glacier. Wait. Oh yeah. Beauty ini. We are leaving from Rathong Glacier and the sunlight. Oh, morning was snow falling in the morning. Go. Yeah. Now we are going to base camp Chorikang, and behind me this is Pinakida. Yo. And the view, snowfield totally. Pinakida, आगे जाओ. Demarcation flag is taking off. It's a beautiful view today. And here is Vishal with daughter. Hi Vishal, how are you? The MC army is going now. This is called the weather of mountain. 10 or 15 minutes earlier it was quite sunny. Now you can see the weather. Oh my god. It's too much snowfall, so I'm unable to shoot my video. Okay, when I will comfortable, then I will shoot. It's look great, but I have to be careful. Okay, while coming to BMC, make sure that the sunglasses too good, otherwise you have to face a lot of problems. You can see there's no storm, the sunlight. Oh, it's too hard.
355 Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling. Picksack.com. Everybody is with Picksack. Oh, the dog, only the dog has no sack. 355 Army VMC HMI. Keep going. Sun is coming. Beautiful lake. Now I can see the Tower of Hope. As we are very close to base camp, HMI. Remove your glass and see. Now the sun has come. Oh. You can't remove your sunglasses right now. If you So white. remove so white, now you will be snowblind. Make sure you can't see anything removing sunglasses. I just remove. Dark and light, and here comes the dangerous road of descent. Oh my god. This is the most dangerous road I have ever seen. You literally don't know when you have to fall. Through base camp to uphill. This is the base camp, right? And from the base camp to uphill. Everyone have to fall here. Earth is coming. Now I have reached to base camp. It was a long, hectic day, but everyone is just smiling because we have successfully completed our glacier training today. Now tomorrow will be our height gain. Base camp. Aga base camp. Oh, our heaven in hell. Come on. तो कैसे हो भाई लोग? पहुंच गए सब फट गया, होठ फटा, नाक बड़ा है काजी। इधर देख, पहुंच गए ग्लेशियर खत्म। अरे यार ग्लेशियर खत्म हो गया यार। सब पहुंच गए। अभी देखता है कौन सा क्लास है। ये हमारा डबल डेकर ट्रेन। चलो खत्म ग्लेशियर ट्रेनिंग। 5 days का मिशन accomplished. मतलब भेज डे। हाँ 3:30 ट्यूसडे फ्राइड राइस और कुछ नहीं पता। वेज अंडा वेज। सर्च एंड रेस्क्यू वाले इग्लू बना रहा है उधर। और ये बेस कैंप है। इतना बर्फ है ना, अगर जो केरोसिन यूज कर, अदरवाइज एलपीजी यूज कर। हाई ऑल्टीट्यूड कुकिंग। लेकिन अप टू कितना हाइट तक हम लोग यूज कर सकते हैं? 16,000 फीट तक। ठीक है, 16,000 फीट तक हम लोग अपना एलपीजी यूज कर सकते हैं। वहां तक आपको म्यूल से है ना। सर इसका दाम कितना होता है? जो 250 वाला है ना आपका, अगर आप दिल्ली से लेंगे तो इसका 350। जो 250 ml का जो इसका कैनिस्टर होता है वो इट विल कॉस्ट यू 350। ओके, एंड द 450 जो ये 450 ml का है ये आपको 650 to 700 का पड़ता है। ठीक है, नाची से किसी बस फैल ना जाए। करेंगे तो सब पता चल जाएगा।
अभी देखिए इन द हाई फ्लेम है ना, जो आप जब हाई फ्लेम में आप लोग बर्नर ब्यूटेन यूज कर रहे हो है ना, इफ यू आर यूजिंग द बर्नर इन हाई फ्लेम, द 450 ml वन इट विल लास्ट अप टू 3 hours, 3 to 3.5 hours, ठीक है। अगर हाई इफ यू आर यूजिंग दिस इन हाई फ्लेम इट विल 3 से 4 घंटे तक ये clear about it? Yes, okay. To refuel it. Refill कहाँ पे करेंगे? नीचे सर। हाँ वहाँ पे यॉक्सन में। है ना, कोई भी आप लोग माउंटेन्स में, यहाँ पे आपको दिन टाइम मैगी दिया जाए तो। Last September what happened? There was a landslide. है ना, landslide हुआ था। The mills were मल्टीपल स्टोर। इस तरीके का आपका ये you'll get this type of stoves for hikings है ना, लो ऑल्टीट्यूड में आप लोग यूज कर रहे हो है ना। आप लोग को वो पड़ा है स्टोव पंप, भाई पंप स्टोव भी ले लो, गैस भी ले लो है ना। गेटिंग प्रेशर आप राइट करोगे है ना। यस सर। थोड़ी देर हीट करने के बाद अगेन यू हैव टू गिव प्रेशर फ्रॉम हियर है ना, आप यू हैव टू पंप इट फ्रॉम हियर। यस सर। पंप करोगे देन इसका जो प्रेशर है वो के लिए क्लास ख़त्म। कल रेनॉक पीक एक्सपीडिशन, रेनॉक पीक हाइट गेन, एंड दिस इज द कंडीशन राइट नाउ। ओके लेट्स एंटर टू टिस्को हाट। तो आज हमारा ग्लेशियर का लास्ट डे था। लेकिन सोचा था अच्छा रहेगा, लेकिन इसने तो तोड़ दिया। हर जगह से तोड़ा। मौसम खराब, पवल सर और खराब। ऐसा ना बोलो। तो फिर हमारा बेस्ट एंजॉय तो किया, लास्ट में सफ़र भी हुआ लेकिन एंजॉय किया, यही बोलना है। तो अभी आज क्लास वगैरह सब ख़त्म। हाई ऑल्टीट्यूड क्या बोलते हैं इसको? हाई ऑल्टीट्यूड कुकिंग एंड यूटेंसिल वो हो गया। तो फिर अभी डिनर करके कल सुबह निकलना है रेनॉक पीक के लिए। देखते हैं मौसम कैसा रहेगा, तो अभी जैसा भी रहेगा ले तो जाएगा। सही बात। ओके देखते हैं, बाय। हिम्मत रहे, हो जाएगा सब तो। ओके।